Explain to me again how this isn't centering men, how this isn't centering the male gaze. Oh no, this is opposite of what we are doing in 2025. I'm sorry, but I won't listen to your music or support you anymore after this release of this album cover. It is triggering for so many women who are survivors of domestic violence. We don't need it. Nothing screams feminist era like crawling on carpet for male validation. Women fought for decades to not be portrayed like this, and now we are glamorizing it as an album promo. This isn't provocative, it's pathetic. Can we not do this? It's 2025. What in the Katy Perry decision making this? Love Sabrina, but this picture, why is the man in there like that? It's not a very empowering image for a woman. I think it's a mistake since most of our fans are women, and as a domestic violence survivor, I find it uncomfortable and I would rather see her empowered than like that. Okay, so in this video we will talk about Sabrina Carpenter's new album Man's Best Friend because इसको लेके काफी controversies हो रहा है and people are saying Sabrina, who is mostly liked by girls, is betraying her female fans. Betraying in the sense कि देखो Sabrina was actually choosing the Taylor Swift way, जहाँ उनके songs का lyrics mostly related है उनके personal relationship के experience को लेके and they expose the men who cheats on them या फिर किसी भी तरह उन्हें betray करते हैं and इसीलिए अगर आप notice करोगे तो Taylor Swift is hated by men because she represent the girl's point of view in a relationship. See, क्योंकि she is a woman, तो अगर वो अपने point of view से एक song का lyrics लिख रही है, तो obviously she will blame the other person if they were wrong. एक relationship में दोनों का अलग अलग point of view होता है. दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के point से सही है. तो just because Taylor अपने song में अपना point of view दिखाती है, that's why she is hated by most of the men. उनको लगता है that her lyrics is about hating men. And Sabrina का जो last 2 singles है, Please 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 and Espresso, mostly girls are loving these songs and इसीलिए she has got more female fans. But recently Sabrina ने उनके upcoming album के cover को launch किया and now this cover is the center of controversy because इसे देख के ऐसा लग रहा है that it represents how men treat women as a slave and somehow it is also promoting physical abuse जो women के साथ centuries से होता आ रहा है and also Sabrina के कुछ particular behaviors है जिससे ऐसा लग रहा है that she is trying to please men and even उनका जो sudden transformation है that is also problematic. Okay, so before we talk about this controversy and this album, let's talk about Sabrina because people are recently getting to know about her, but she actually started her career as a Disney child actress. She first worked in a television series named Girl Meets World and उसके बाद उन्होंने खुद को Hollywood Records के अंदर साइन कर लिया जो बेसिकली डिज्नी का म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल कंपनी है. हॉलीवुड में जितने भी सिंगर्स है ना वो किसी न किसी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल कंपनी के अंदर साइंड है. एनीवेज 2014 में उनका फर्स्ट सिंगल कांट ब्लेम अ गर्ल फॉर ट्राइंग रिलीज होता है. इसके बाद भी सबरीना के कई म्यूजिक एल्बम्स रिलीज होता है एंड शी ऑल्सो वर्कड इन मेनी मूवीज बट अभी तक उन्हें किसी भी सॉन्ग या मूवी के रोल के थ्रू मेन स्ट्रीम पॉपुलरिटी नहीं मिला था. बेसिकली शी वॉज नॉट येट अ ब्रांड. नाउ 2021 में सबरीना ना डिज्नी को छोड़ के खुद को आइलैंड रिकॉर्ड कंपनी के अंडर साइन कर लेती है. नाउ सी एवरी रिकॉर्ड लेवल कंपनी का ना कुछ विजन होता है. इवन दो आप अपना खुद का म्यूजिक लॉन्च करोगे बट उनका कुछ खास रूल्स होता है जो आपको फॉलो करना होता है. जैसे आपने पी डीडी के बारे में सुना होगा कि कैसे वो उन आर्टिस्ट को अब्यूज करते थे जो उनके रिकॉर्ड लेवल कंपनी के अंदर साइंड होते थे एंड जस्टिन बीबर इज ऑल्सो वन ऑफ हिज विक्टिम. नाउ सबरीना के केस में ये तो नहीं था बट देयर आर सर्टेन प्रेशर फ्रॉम द रिकॉर्ड कंपनी. वो आपके थ्रू जो गेन करना चाहते हैं उसके लिए वो आपको प्रेशराइज करेंगे एंड लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने इस कंपनी के अंडर खुद को साइन किया है शी स्टार्टेड लुकिंग डिफरेंट. पहले उनका जो क्यूट एंड इनोसेंट सा लुक था नाउ इट्स टर्निंग इनटू अ टिपिकल हॉट गर्ल लुक. नाउ यहाँ पे एक और फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना होगा एंड वो है दैट शी इज ग्रोइंग अप. शी इज जस्ट 26 एंड जब उन्होंने खुद को आइलैंड रिकॉर्ड के अंदर साइन किया था शी वाज ओनली 23. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पार्ट ऑफ हर ग्रोइंग अप. लेकिन कुछ मेजर चेंजेस उनके फेस में देखने को मिला है एंड सम पीपल बिलीव दैट शी हैज अंडरगॉन सम प्लास्टिक सर्जरीज. इवन उनके अपीयरेंस में भी बिग चेंजेस देखने को मिला है एंड ये मोस्टली रिसेंट कुछ ईयर्स में देखने को मिला है. Now let's talk about her upcoming album Man's Best Friend and why it's controversial. So as you can see यहाँ सबरीना का जो पोज है जिस तरीके से this person is grabbing her hair it is very problematic because it's not only represent toxic relationship but also physical abuse and also इसके साथ उन्होंने ये भी पोस्ट किया which is a dog wearing a collar. तो मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसे दिखाया गया है that a man's best friend is a dog and she is trying to be that dog and people are obviously offended by it कि कैसे सबरीना ऐसे बिहेवियर को प्रमोट कर सकती है. How
how can she romanticize this kind of behavior? Is she trying to gain the male audience now? Because as I mentioned earlier, she had mostly female fan base and she was also following the Taylor footprint. But इस एल्बम के अनाउंसमेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया है. जैसे इससे रिलेटेड कुछ ट्वीट्स देखते हैं. For someone who keeps calling men pigs, she keeps degrading herself to appeal the male gaze, pretending to be this hyper-aware feminist anti-male figure while your entire artistic identity still revolves around seeking male approval and being desirable to them. Girl, the cover, why are we doing this for the male gaze in 2025? Whoever came up with this disgusting slope needs legit mental help. I mean, obviously, what is this? What are you trying to tell young women with this album cover? That you get on your knees for men so they can drag up your hair? Oh, and also that you are a dog? No wonder the youth are in such a mess. Pretending to be anti-men while selling your entire self to them is wild. Sabrina, I hope one day you find your worth because degrading yourself isn't worth it. So as you can see, people are calling this out. Now there is another point of view. जैसे कि possibility है कि Sabrina actually इस album में बात करेंगी that how this behavior is not acceptable and how a girl should not behave like this in a relationship. शायद वो इसे एक irony की तरह दिखाएंगी and कुछ लोगों को ये लग रहा है that people are judging her way too soon. Maybe इस album में वो बात करेंगी कि कैसे एक toxic relationship में men wants to treat a woman like a dog या फिर वो चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके हर behavior को accept करे and वो वही करे जो वो चाहते हैं. So maybe it is presented in a sarcastic way. But ये तो तभी पता चलेगा when she will release her album. But not only this, recently उनके कुछ concerts से उनके certain behavior को call out किया जा रहा है. जैसे कि उनका dressing sense. उनके dressing sense में जो sudden change आया है उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. And she is also doing this kind of things which somehow represent that how a woman should please the men. And ऐसा कहा जा रहा है that she is doing all this for male gaze and attention. And there are possibilities that her music label company wants her to carry this kind of personality. See, for a music label company, they only want attention. जितना ज्यादा सबरीना को यहाँ attention मिलेगा उतना ज्यादा उनका फायदा होगा. So maybe they are doing this for that. And as I said कि ऐसा भी हो सकता है that the album cover is opposite of the songs. Anyway, so what do you think about it? Do you think she is doing all this for male gaze? Let me know in the comment section. And if you like this video, give it a like. And for more such videos, subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.